Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Zainab Kamran and welcome to the new lecture of English S4. We are going to move forward with the book exercise. So take out your books and open page 19 as displayed on your screens. Page 19. This is a new topic, so first let's understand what is a noun phrase. A noun phrase is a group of words describing the head noun. Noun phrase is a group of words describing the head noun. It means that it is made up of 2 or 3 words which all act as a noun. तीनों या दोनों या तीनों words noun के तौर पे ही act करते हैं एक sentence में. लेकिन एक head noun which is head noun उसको words describe कर रहे होते हैं. For example, a strange old lady with a shimmering veil. The noun is lady. हमें पता है कि इस sentence में lady is noun. But strange old, a strange old, these 3 words are also describing the lady and also a part of that noun. हम उस लेडी की बात कर रहे हैं जिसके पास एक शिमरिंग वेल है, लेकिन ये 4 वर्ड्स मिलके एक नाउन फ्रेज बना रहे हैं. 2 वर्ड्स उस नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन उसका पार्ट भी है. इट इज़ अ नाउन फ्रेज बट द हेड नाउन इज़ लेडी. अ स्ट्रेंज ओल्ड लेडी, noun is lady, head noun is lady, and the whole phrase is describing the head noun. A strange old lady with a shimmering veil. So a noun phrase is a group of words with a head noun और बाकी words उस head noun को describe कर रहे होते हैं. Now this exercise is that we have to underline the noun phrases and then circle the head word. हमने noun phrase जो है उसको underline करना है और circle करना है head noun को जिसको phrase मिलके describe कर रहा होगा. For example, first one, the strange old lady. A strange old lady with a shimmering veil. So lady is the head noun and a strange old lady is noun phrase. A strange old lady is noun phrase and lady is the head noun. B. The snow-covered peaks. The snow-covered peaks is a noun phrase. Peaks की बात हो रही है. Peaks is the head noun, लेकिन the snow-covered is also a part of this noun, but is describing it as well. उसको describe भी कर रहा है और उसका part भी है. The snow-covered peaks. The snow-covered peaks. The snow-covered peaks. So we will underline the snow-covered peaks and the head noun will be peaks. A golden dragon with 8 eyes. A golden dragon with 8 eyes. Now here the noun phrase is a golden dragon with 8 eyes. ये पूरा noun phrase हमें बता रहा है किसके बारे में, एक ड्रैगन के बारे में, कि एक ड्रैगन है जिसकी 8 आंखें हैं. लेकिन बात तो सिर्फ एक ड्रैगन की हो रही है, which is the head noun. So head noun will be dragon and this whole phrase is a noun phrase. A golden dragon with 8 eyes. पूरा फ्रेज एक नाउन की ही बात कर रहा है. अ गोल्डन ड्रैगन विद 8 आइज. एक ड्रैगन है जिसकी गोल्डन आंखें हैं और 8 गोल्डन कलर है और 8 आंखें हैं. पूरा फ्रेज एक नाउन की ही बात कर रहा है. बट द हेड नाउन इज ड्रैगन. डी. अ डार्क राइडर इन अ ब्लैक क्लोक. इसी तरह ये वाला भी अब फुल द होल फ्रेज इज डिस्क्राइबिंग ओनली वन राइडर. हमारी बात एक ही राइडर की सिर्फ हो रही है. अ डार्क राइडर इन अ ब्लैक क्लोक. The whole phrase is describing the rider and the head word is rider. A dark rider in a black cloak. E. A wide dusty valley. A wide dusty valley. Similarly, 3 words are describing the valley. बात एक ही valley की हो रही है, but with the help of the noun phrase we are describing it as well. So the head word is valley. Valley. Number 2 and 3 are imaginative questions. You have to use your own imagination to add a noun to each phrase. Now if we add any noun that makes sense. For example, number 1, an
An unusual mist over the mountains. An unusual mist over the mountains. We could have also added an unusual sight over the mountains. Unusual सी कोई sight mountain के ऊपर है, या unusual cloud over the mountains. You can add any noun and make it a noun phrase. The dash strange dash on a tree. A strange bird on a tree. A strange bird on a tree, or a strange cloth on a tree. You can add any noun to make it a noun phrase which makes sense. A strange bird on a tree. C. Dash old dash with a bent stick. An old man with a bent stick, or an old woman with a bent stick. Add any nouns. D. Dash enormous dark dash. An enormous dark room, or an enormous dark figure. An enormous dark man. Choose any nouns. E. Dash grey dash under a wet stone. A grey material under a wet stone, or a grey insect under a wet stone. Use any noun that makes sense. और अब सिमिलरली इसमें भी बात एक ही नाउन की हो रही है. मिस्ट, ए पार्ट में मिस्ट की बात हो रही है, बट अदर वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग इट और मेकिंग सेंस ऑफ दिस नाउन. सो हेड नाउन इज मिस्ट, द अदर इज नाउन फ्रेज. Number 3 is you have to use write your own phrases about these pictures. You have to write phrases about these pictures with a given frame. हमें एक frame given है, a dash with, in, on, dash. So use these. For example, one is a golden dragon in a cave. A golden dragon in a cave. B. What is it? You can say a bird on a tree, or a strange bird on a tree, or a weird bird on a tree. Number C1. What is it? You can say a monster with 6 legs. A monster with 6 legs. D. An owl with a letter, or an angry owl with a letter. So use your own imagination to solve this. Complete the whole page. Complete the 3 questions on this page, and your homework is workbook page 11. Workbook page 11. Thank you.